So let us continue with the next sum, that is question number 6. Question number 6, and the question is Tip Top Electronics supplied an AC of 1.5 tons. Cost of this AC is 15,200 with GST. हाँ, मतलब 15,200 में दोनों चीज है, टैक्सेबल वैल्यू भी और जीएसटी भी है. Rate of CGST is 14%. Then find the following thing. Now normally this question when it comes 3 mark के लिए आता है, because in the question they are asking us how many things to find 6. So each answer will carry half marks. So let us start with the sum. ये भी वैसे ही है जैसे हम लोग ने लास्ट सम किया ना, टैक्सेबल वैल्यू टोटल में से निकाला 100 वाला मेथड, सेम टाइप ऑफ सम. सो हियर वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द टोटल वैल्यू. टोटल वैल्यू इज इक्वल टू ₹51,200. रेट ऑफ जीएसटी, रेट ऑफ सीजीएसटी दिया है इधर हम लोग को, तो जीएसटी क्या रहेगा, सीजीएसटी का डबल. So we are going to write this rate of GST is equal to 2 into rate of CGST, which is equal to 2 into 14%, which is equal to 28%. Okay, now next, let the taxable value be X. Let the taxable value be X. Next, if taxable value is equal to 100, then 28% GST. 100 के ऊपर तुम कितना भी परसेंट कैलकुलेट करो, आंसर उतना ही नंबर आएगा. तो 28% ऑफ GST इज 28. हम लोग ऐसे ना डायरेक्ट लिख सकते हैं, हमको वो फुल डिस्क्रिप्शन दिखाने का जरूरत नहीं है. 100, since the last sum was the first this type of sum, hence I showed you that 100 into 18 upon 100. So therefore total value is equal to 100 plus 28, which is equal to 128. अब कंपेयर करेंगे, टैक्सेबल और टोटल को कंपेयर करेंगे, टैक्सेबल एंड टोटल. अगर टैक्सेबल 100 है तो टोटल 128 है. तो अगर टोटल 51,200 है तो टैक्सेबल कितना है. चलो लेट अस सॉल्व दिस. सो इट्स 100 into cross multiply we will do here, 51,200 and x into 128. अभी ये 128 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, LHS में आए तो डिवाइड होगा. सो हेंस वी गेट 100 into 51,200 the whole divided by 128 is equal to x. Let us solve this. Go on reducing 100, 128 and 51,200. So when you reduce it completely, you may find that यहाँ डिनोमिनेटर में 1 मिला है और न्यूमरेटर में इधर you have got 400. So therefore x is equal to 400 into 100, that is 40,000. So therefore taxable value is equal to rupees 40,000. Taxable value is equal to rupees 40,000. So this is one of the final answer. अभी हम लोग ना क्वेश्चन में जरा देखते हैं, हमको ना लाइन से फाइंड क्या करने बोला. They are asking first to find the rate of SGST, that we will find weight. लेकिन यहाँ हम लोग ने ऑलरेडी ना rate of GST फाइंड करके रखा है. This is also one of the final answer. So we have to put this also in box. Rate of GST मिल गया हमको इधर.
So one of the answer is over. First answer is over. Taxable value हमको मिल गया. चलो rate of SGST भी find करते हैं. तो we can write like this: rate of SGST is equal to rate of CGST, जो हमको already दिया है CGST, which is equal to 14%. So this is the third answer, rate of SGST. So first हो गया, second हो गया, third हो गया. Total amount of GST that we will find. Total amount of GST is total minus taxable. Total amount of GST is equal to total value minus taxable value. Which is equal to, total value was 51,200 minus this is 40,000. So hence 51,200 minus 40,000 is 11,200. So rupees 11,200 is the GST amount. Our fourth answer. Next, amount of CGST. They're asking us to find the amount of CGST. So amount of CGST, GST का आधा होता है ना. Amount of CGST is equal to GST upon 2, which is equal to 11,200 divided by 2, which is equal to rupees 5,600. Our fifth final answer. And finally the last one, amount of SGST. Amount of SGST is equal to amount of CGST, which is equal to rupees 5,600. So with this we have finished all the आंसर्स. पूरा 6 का 6 टर्म्स फाइंड करना था, हमने कर दिया.